Namaskar, good morning, Vanakkam to all dear sisters and brothers joining this Young Indian Theosophists online gathering of the Indian section. And in today's session, we are going to have something different from our usual meeting. But before we start that, let us all come together in heart and mind and invoke the presence of that immutable principle in which we live, we move, and have our being. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. Welcome again, everyone. And as you know, today's session of Young Indian Theosophist is a special session, which is not a usual study or lecture session, but it's going to be kind of a workshop, which is about self-observation. It's an interactive session. So please get in the mood of being asked some questions by our facilitator. And to conduct this session, we have also a person who is very who has a talent of conducting such sessions, and she likes to involve the audience, and she likes to communicate not one way but from both the sides. And for that we have with us today Sister Suvralina Mohantiji. She is a life member of Theosophical Society of India since 2003. I know everyone knows her in the Indian section and other places due to the work that she has done. She has addressed in youth camps on motivating and leading the youth. She has been associated with NGOs and organizations working for holistic development of children. She founded a new lodge, Prayas Theosophical Lodge, in December 2017. And side by side, she is also not just through a lodge, but also she has made a Prayas club through which she interacts with a lot of people in her society, with children, and try to groom them and try to introduce theosophy to them in simple way. The members of the lodge, Prayas Lodge, are mostly young children and youth for whom she conducts weekly meetings and also seminars, special study classes, workshops from time to time. And during her membership of last 17 years, Suvralina has also been a very active TOS member working for poor and unprivileged children. She took charge of TOS Delhi region in 2016 as the regional secretary and has been dedicatedly working under the guidance of senior member of Theosophical Order of Service. And also she has been given the duty of being the national lecturer of the Indian section. And last but not the least, recently she had the opportunity and privilege to meet our esteemed president, Dr. Srimati Dr. Draupadi Murmuji, and regarding her work. And I think she had a very productive and fruitful meeting with her. And all the best wishes. Without taking any more time, Suvralina ji, the stage is all yours. Thank you, Shikhar. Why we chose to do this workshop is because we have been learning a lot, we have been listening a lot, we have been talking a lot. So probably I thought this is the time, let us sit together and explore together
how our being has changed, because we have been doing a lot of things. Like, as you said in my introduction, Suvralina is doing this, that. But is there any change in my being? So basically, this workshop, it's a half an hour workshop or 45 minutes workshop. I understand it's not a physical workshop wherein we would be exchanging notes, writing something on the board, or doing some self test or group test. But I would try my best, like sitting externally, nobody is connected, only the virtual meeting is happening, but without physically seeing each other, touching each other, or kind of facing each other. But still, let us try, how do we connect? Why I'm saying so? Because as members of Theosophical Society, young and old, we have definitely moved from one version of our being to another version. Be it 1%, 2%, 5%, 100%, but everyone has gone through some transformation. I hope you all agree with it. Some transformation, as in a bit of thought has changed, our feel factor has changed, looking at our surroundings probably has changed, the interaction with people, places, material, plants, animals. I think some changes happened. So at the beginning, when we were not members, and now we are members for so many years, we have probably gone through a journey, and a little bit of churning has happened within. So with that basis, let us do an exploration together. So this is a workshop because we would be talking together, writing together, doing things together. People are most welcome to share their experience if they want. If they do not want, they can just do the exercise and keep it to them, but it will be a self-test. That's correct. Can we go ahead with that, such a fashion? Okay, good. So what we'll do is, we will do one or two little tests, which will be purely our individual or personal notes or personal review or personal observations. We might choose to share with the audience, we might not, but at least deep within, we will understand what are we observing. So before we start those tests, three things I thought we should start exploring through this self-observation is, so probably I would just type it in the chat so that people can just write on their note if they have a notebook, or if somebody doesn't have a notebook, can start doing a mental note. There is always a mental note happening when we are talking, when we are listening. So my first exploration is, what are the ideas we developed after coming in contact with theosophical viewpoints, literature, sessions, etc.? What are the new ideas? After joining the TS, understanding theosophical literature, reading, attending meetings, attending talks, watching so many videos, what are those ideas? So everybody can just make a note. This is purely personal. Anyone can write anything up to his or her understanding. What are those 1 or 2, 5 major ideas that the person developed through these theosophical discussions, studying the literature, attending the sessions? So quickly, everyone can write while I'm putting the second self-exploration question also. So these are quick 1-minute questions to our own selves. If anyone thinks he or she can write on the chat, most welcome. Whatever comes to your mind. Whatever comes quickly. Then the second thing is, what have changed in our lifestyle, thoughts, and attitudes? So it is not about, I just read, I attended, I met so-and-so person, I met so-and-so senior theosophist. It is about, just meeting, going on in life. But what actually have gone into, what are those things, those have gone into my lifestyle, the way I live my life, my thought pattern, the kind of attitude I carry? What are those? 1 or 2, whatever. Verb, adjective, noun, whatever comes to the mind. We can just put it. Then there is this number 3. What are we finding difficult to implement? Because there could be many things we would have learned through this procedure, coming in contact with your sophist, reading literature, doing a lot of services,
preparing talks, attending seminars. But also through that, there could be some things, some one or two things, which anyone would find difficult to implement. So just write those things and keep it aside. And since it is a half an hour to 45 minutes workshop, we are not probably having so much time to write 50, 100, 80, 90 things. We could probably write one or two things, but this list will be a dynamic one. So whenever we find time, we could ponder upon these questions and keep on adding things. I think that will help us. So this is a trigger of everyday workshop. So this workshop is a starting point, but every day, since it's self-observation, I don't think we need anyone else to come and do it for us. We can always do it week on week, maybe a month on month thing, or maybe an annual thing, if time doesn't permit you to sit daily, weekly, or monthly. If it is done, then let us explore 3 things which you may write on a piece of paper, making 3 columns, or making 3 separate sheets also. So I call it, if you can see in the chat, this is one exercise each one of us could probably do as a self-observation. That is called learn, do, share. I hope that whatever I'm putting in the chat is clear, Shikhar? Good. So each of us could prepare 3 columns, learn, do, share. So under the column learn, we would put up those things which we have learned from the Theosophical Society, from the literature, from the talks, from the understanding, from the so many seminars, webinars we have attended. What are those things as a Theosophist I have learned so far? It could be as simple as, now I have understood law of karma better, so my learning could be law of karma, or learning could be thoughts transform, so I can send thoughts to heal people. That could be a learning, or any small factor of life, aspect of life, which you think, okay, once I came to Theosophical Society, then only I learned this. So whatever comes to your mind, whatever comes to your heart, please write those. What are those learnings so far I have learned from the society, from the Theosophical Society? Now, while we put the things under the learn column, can we do a mapping? Whatever I have learned, how many goes to my do column? Do means when we practice, when we actually do it. Like, I have learned that we should be tolerant with all religions, but do I do it? Make sense? I have learned that whatever comes to me is my own karma, so I should be cheerfully accepting what's happening with me, but do I do it? I have learned that if I send out negative thoughts, it is going to bring me negative vibes. So do I work on it? Do I control, or do I replace negative thoughts with positive ones? All those stuff. So you can choose. I mean, I'm just giving leads to think, but everybody's learnings will be different. Everybody's doing will also be different, right? So whatever I have learned, how many would go under do column? You can just simply put an arrow mark, or you can just tick it. Okay, these are my learnings and this is working. Got it? And how many learnings have I been able to share? Why I'm saying share is more important, because while we are saying that we are living universal brotherhood, we are studying
science and philosophy and literature of other aspects, comparative study. I mean, if I remotely analyze the three objects and exploring my hidden potential, talent, energy, right? All these are our three objects. So out of which, when I learn something and I do, and I explore something and I observe something better, do I go and share? In our daily life, you would see that whenever you read a good book, you go and share it. And today is the era of social media. People put it on Facebook, WhatsApp, you share, you quickly share. Forget about reading a book. Watch a good movie, you go and share. Hey, that's a nice movie, you should go and watch it. Very interesting movie. Why do we do this? Because we think or we feel that people should be benefited. People should be knowing it. Probably it will bring some change in their life. As Theosophists, have we been able to share all our learning so far? Or are we finding it difficult? So here comes a big question. Many of us have struggled with that. I mean, very senior members of Theosophical Society have also, kind of told me this, that because we are not perfect, we are not ready to share, because we ourselves are not perfect. So concern here is, as Theosophists, we are on a path towards perfection. But on that path, certain things we keep on learning. When we share it, we are indirectly or sometimes directly helping others. Do we all realize here? All of us sitting here? Yes, no? You can just show me a thumb or kind of put it in the chat. Sharing is very, very important. That is why it's not just learn and do, it's also share. Why? Because perfection is a journey, but we should be on the path of progression. While we are progressing, we are changing our version with our baby steps, 1%, 2%, 5%, 10%, right? But if we strictly say that we will only be perfect and we will only after, attaining adepthood, or after I become a Hansa, Paramahansa, only I'll open my mouth. Till then, I will not share anything. I don't think that's a correct approach for us Theosophists. Because this is also coming under service. Sharing is service. It is not always donating is service. It is not always giving money is service. It is not always going and getting things done for another person is service. Probably by sharing a good thought, by a good an analytic or a good logic, and we explain it to the person who's suffering, this person might overcome some distress, some sorrow, some pain. So sharing is, for me, it's service. So probably we could map this learn to share with a bit of our SMS. Learning is studying, if we look at that. So when I study and contemplate, I'm putting some focus on my study. I'm doing something. I'm kind of exercising that. And when I obtain something, I'm going to serve this. So I'm going to share. So this just occurred to me. So why only SMS as a factor? Why not practically learn, do, and share? This is how I thought would come under a self-observation as a Theosophist, because we need to contribute as a whole to the universe. So it's not by self. My little self is the beginning, but then there is an expansion. Shikhar Bhaiya has created a wonderful healing meditation. So he teaches us, expand your consciousness, right? So when you expand, you reach out to the every nooks and corners of the universe. So why not grow from that little self to the wholesome, the greater self, the prevailing one? That's how. And then I had read, I think in the Sacred Doctrine, if you will have read it, you would have noticed. It's just a personal experience I'm sharing. What thought clicked me while reading that. They're saying Vishnu, the Vishnu and Shiva and Brahma, Trinity thing. So it's written that Vishnu comes from Vish, V-I-S-H. And if I remember correctly, Brahma comes from Brih, B-R-I-H. And Brih is basically growing, expanding, whereas Vish is prevailing, फैलना, हिंदी में जो फैलना बोलते हैं.
सो मुझे कहीं से एक आइडिया आया कि हमारे हिंदी में भी एक विष और अमृत की बात होती है, तो विष फैलता है, कहते हैं ना विष, कुछ सांप ने काट दिया, बिच्छू ने काट लिया, विष फैल गया, तो विष फैलता है। तो मुझे अचानक, मैंने वो बुक को बंद कर दिया, फिर मुझे लगा विष क्यों फैलता है, अमृत क्यों नहीं फैलता? विष बड़ा राजा बना हुआ है, हर जगह फैल जाता है, अमृत क्यों बैठा हुआ है एक जगह कोने में? देन इट ऑकर्ड टू मी, विष इज मोर लिक्विड, फ्लूइड, वो फैलता है, फैलने का मतलब वो जल्दी जल्दी पिघलता है। अमृत इज रॉक सॉलिड, पिघलने के लिए टाइम लगेगा। अमृत इज ट्रूथ, सत्य है, कठोर है, स्ट्रांग है, इतना जल्दी हिलने वाला नहीं है। So what happens if we kind of do a bit of self observation, sometimes the negative aspect of our life, it flows quickly, फैल जाता है वो। There's so much of negative news, आप चैनल खोलिए, न्यूज़पेपर देखिए, all negative news spreads quickly. कहीं किसी कोने में कुछ अच्छा हो रहा है, उसको निकलने में, पहुंचने में लोगों के पास, उसका असर होने में टाइम लगता है। That's the difference between विष and अमृत to me। तो मैं थोड़ी इस तरह की बातें करती हूँ, पागलपंती करती हूँ, तो मेरे पागलपंती को नजरअंदाज करिएगा, बट इस थॉट को थोड़ा देख के बताइएगा मुझे। आफ्टर आई फिनिश दिस, आई वुड रियली लाइक टू all of us to contemplate on such things, because many things happen. We read a book, something clicks to us, why not we go and observe it? And for me that is self observation, because if I'm not relating to an idea, if I'm not relating to a book, if I'm not relating to a plant, an animal, a person, what is that I'm observing them? It is like morning में उठ के जब हम कंघी करते हैं, हम मिरर देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, we are observing, right? But do we do such mirroring in every situation of our life? It's not about how do I look, what do I think, what do I feel? That's more important as an observation. हमने टॉक प्लान किया, हम गए, हमने टीओएस के बहुत सारी सर्विस कर दी, एंड ऑफ इट व्हाट इज दैट आई एम बीइंग, व्हाट इज द फील फैक्टर, वो हार्ट एंड माइंड में क्या हो रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा वही वाली बात है, फिजिकल से थोड़ा सटलर फॉर्म को हमें देखना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस लर्न, डू एंड शेयर, वी शुड कीप ऑन pondering, right? Then another aspect of this which I thought I should do as a self test, let's do this way. What I'm doing is, I'm just doing an example here, but as theosophist you can pick up other aspects. I'm just writing down a lot of aspects of individual's life. Let's say I'll just put it, I'm just writing it. I'm writing a lot of things here, helping, whatever comes to my mind, I'm just writing. Compassion, or let's say tolerance, or let's say study regular. It's not about study only, study regular is a aspect of life, let's say. Or let's say yogic exercise, whatever that comes to my mind, I'm just writing. Let's say I'll say social work is one aspect. Sharing experience is one aspect, let's say. And maybe I would just write cheerfulness, whatever. Or I'll just keep positive thoughts. So many things. I'm just quickly writing it, whatever comes to my mind. So randomly, you could probably write about whatever that comes in your being. This is just an exercise. Now, I kept around, let's say, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Out of this 9, and I'm sure all these 9 would be a part of each of us sitting here. Percentage might vary. So out of this 9, if I say each of us, let us pick those 5 out of this list of 9
those five, which is my being, कि ये मैं ही हूं, ये मेरे बारे में ही है, this is me, because we're doing self observation. So let us choose five, any five. You might just write it on your piece of paper, make a mental note, और 9 चीजों को लिख के उसमें एक टिक कर सकते हैं. अगर ये मैं पेपर पेन में करती, मैं इसी तरह से करती, मैं आपको पेपर देती हूँ, बोलती कि एक टिक करिए. So just tick out 5 things quickly. Since I'm able to see Shikhar only, Shikhar, you can just show me your thumb once done so that I will move. Assuming that आपकी स्पीड सबके साथ एक जैसी होगी करके. Any 5 you just write. अच्छा, आपने ये लिखा, अच्छा आपने लिख दिया, नहीं आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट्स अ सेल्फ टेस्ट. अच्छी बात है, आप लिख रहे हो, दैट्स फाइन. ठीक है. नाउ इफ आई से नहीं भाई 5 से नहीं चलेगा, आप एनी 3 चुनिए, एनी 3. I know like you everybody would start smiling कि 3 थोड़ा, it's like you know आपके घर में शादी है और आपकी मम्मा ने बोल दिया कि आपको ना सिर्फ 10 दोस्तों को बुलाने हैं और आपके 100 दोस्त हैं, चुनना मुश्किल हो जाता है, किसको बुलाएं, राइट? ठीक है, आप मेरे साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है. So 3 things you are, and then if I say 9 में से जब आप 6 चुन रहे थे, 5 चुन रहे थे, I'm sure something was happening in your mind and heart. What was happening? You were probably reflecting on your regular habits, your memory. आपने बचपन से आज तक किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया? It takes you through your memory also, you know, from your childhood till date. जब मैंने 5 का 3 करा, थोड़ा लगा कि यार 3 का मतलब मेरा मेजोरिटी जो है मैं ये चुनूं. Majority is what? Now if I ask you, what is just that one thing? It will be difficult, but just choose it. You don't need to write, but you may write, you may not write, not an issue. Just choose one thing that is you, that is your being. It's difficult. It's difficult, but when you do it, no, you would stand for it. That is you, your core. Every one of sitting here should have one core at least. What is that I'm doing as a theosophist, as a family person, as a human being on the earth? What is that one thing I'm living for? I'm standing tall for that. And if when we do this kind of a rigorous observation, no, then हमें पता चलेगा हम असली में है क्या, हम किस चीज के लिए ज्यादा वो कर रहे हैं. And this is very much required. And interestingly, we'd see when we do that, we would realize probably in our life there is, even if just one thing, but वो एक चीज हम जरूर कर रहे हैं. In any situation, it could be as simple as मेरा 4 बजे सुबह उठ जाना. मेरा 4 बजे सुबह उठ जाना is non-stop. People who know me personally, who live with me, they would realize कुछ भी हो जाए मैं 4 बजे उठ जाती हूँ. And ये मेरे साथ एक नॉन एफर्ट वाला काम हो चुका है. I don't put any effort, no alarm, nothing. My body knows. Miraculously, every day 4 o'clock, I would wake up. That means there is just one thing in my life which is happening without my effort. ऐसे सबके लाइफ में कुछ तो जरूर होता होगा. 4 बजे उठना इस मेरे बीइंग में कैसा है मैं वो नहीं बोल रही, इट्स डूइंग में भी आ सकता है, बट हो सकता है मेरा बीइंग हो गया हो ये. So we should know, is it that कुछ भी हो जाए मैं मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा हूं, या फिर कुछ भी हो जाए मैं टॉलरेट करूंगा, या फिर कुछ भी हो जाए मैं नेगेटिव थॉट लूंगा ही नहीं, पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहना है मुझे. We have to do that kind of an observation. So do you like this exercise? Do you think it's helping? It's helping, you know, connecting to our core. है ना? So learn to share is more of a overall majority. But when we do this core, finding that one thing in me, then I would realize what I'm actually doing and I'm being. ये बहुत जरूरी है. मुझे लगता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन जब तक हम इस तरह से थोड़ा एफर्ट लेके कर लेंगे ना, अपने आप में वो मिररिंग हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
एंड हमें दिखेगा हम असली में कर क्या रहे हैं. Now, while doing this exercise, there will be another thing coming as a regular habit, we could say, or we could say planning. क्योंकि ये तो हो गया मेरे को अपना आइडेंटिफाई करने के लिए. एक मेरा प्लानिंग में ये प्लान आता है विच आई कॉल इट, आप लोग भी लिख सकते हैं अपने नोटबुक में, जैसे मैंने लर्न डू शेयर का कॉलम बनाया. बिकॉज आई टूक यू थ्रू दिस कोर थिंग, इसमें आपको पता चल गया कि भैया मेरे से ना स्टडी रेगुलर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो देखने से आता है दिमाग में, राइट. जो बंदा स्टडी रेगुलर, यार सही में यार स्टडी रेगुलर करना चाहिए. मुझे एक बार मितालिनी दीदी ने बोला, जो अशोक महापात्र जी हैं, वो सुबह 2 घंटा कुछ भी हो जाए पढ़ते हैं. तो जिस दिन उन्होंने बोला ना, मुझे थोड़ा स्टक हुआ. मैंने कहा कि मैं वैसे पढ़ती रहती हूँ, बट सुबह उठ के 2 घंटा इज समथिंग अमेजिंग. तो एक होता है, आप जब दूसरे को सुनते हो ना, इट क्लिक्स. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स यू वांट टू डू, यू विश टू डू, कि एटलीस्ट एक प्रैक्टिस करके देख सकते हैं क्या. सो दैट इज व्हाई एक 3 कॉलम में बनाती हूँ. दैट इज कॉल्ड स्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू. व्हाट इज दैट आई कुड स्टार्ट. मैंने अभी तक नहीं किया, कोई मतलब नहीं, ठीक है. मेरा अभी तक योगिक एक्सरसाइज होता नहीं था, मेडिटेशन मेरे से हो नहीं रहा, नो इश्यू, कोई भी ये कह सकता है, बट एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट. व्हाट इज दैट आई शुड स्टॉप इमीडिएटली. मान लो किसी में वो कहे कि मेरे में बड़ा धैर्य नहीं है, बड़ा मैं पैनिक उसमें रहता हूँ, एंजाइटी में रहता हूँ, सो आई शुड इमीडिएटली स्टार्ट, immediately stop being anxious about things, anxiety को control करना. I should immediately stop such certain behavior of my life. And what is that continue? ये सब self explanatory words हैं. Start is which I have not done, I would do. Stop is ये चीजें मुझे immediately stop करना है. जैसे मेरा गोलगप्पा खाना, मेरा लिवर और वो सब इतने खराब हो गए, इतना मैं गोलगप्पा खाती थी, पुचका गोलगप्पा जो भी, जिसको आप जो भी बोलते हो, खा के इतना खराब हुआ ना, the day I decided I will stop, I stopped. वो वाला जो आपको आएगा, जब तक गोलगप्पा खाना is a very miniature part of life, but there are many things which we could strongly take a decision, no, I should stop it, then continue is, this is a good habit. जैसे 4 बजे सुबह उठना, I would definitely continue. Why should I stop that? मैं अपनी बात अगर रखूं, तो जैसे मैं अपने लिए अगर बोलूं कि I will start studying more, maybe 2 घंटा जैसे सुबह मेरे को मिला किसी से सुन के, और स्टॉप जैसे मैं अपना खट्टा वो तीखा ये सब खाने में फिजिकल बॉडी को क्लीन करने के लिए, और कंटिन्यूअस मैं अपने सुबह जो 4 बजे उठती हूँ ना, उठते ही रहूंगी. आई कंटिन्यू डूइंग दैट. सो दैट इज व्हाई दिस स्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू. Each of us sitting here could probably do this exercise. See, what is that? I should start, stop, continue. And interestingly, मैं सिर्फ अपने लिए स्टार्ट, स्टॉप, कंटिन्यू डिसाइड कर सकती हूँ. मेरे लिए शिखर, राजम मैम या विमल या अशोक जी नहीं कर सकते. शिखर के लिए विमल मैम नहीं कर पाएंगे, विमल के लिए अशोक जी नहीं कर पाएंगे. गेटिंग इट? Everybody knows what is that I'm going to start, what is that I'm going to stop, and what is that I'm going to continue. Because if you don't do it, मेरे लिए कोई तो आके करेगा, ये उम्मीद में मैं थोड़ी ना बैठ जाऊं कोई आके मेरे लिए करके जाएगा. ऐसा नहीं होता है. We have to start it from our own. एंड इसके लिए ऐसा नहीं कि अभी तो ठीक है, हम बड़े हो गए हैं, मैं बोलूंगी अभी तो मैं 50 साल की हो जाऊंगी जनवरी में, रहन दो, अभी और 50 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, 10 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, 5 साल जिएंगे नहीं जिएंगे, छोड़ो जो हो गया हो गया. ऐसा नहीं है. और एक छोटा बच्चा अगर कहेगा कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो अभी टाइम पड़ा है और 20 साल बात करूं, ऐसा नहीं है. एट वॉट एवर लेवल वी आर, व्हेन आई एम सेइंग, मैं फिजिकल एज की बात कर रही हूँ, बट मेंटल एज में भी हम लोग अलग अलग लेवल पे हैं. We could probably start at any point of time. What is that I'm going to bring a change? And interestingly, we might not openly say certain things, but deep within we know what we are doing. हमें लगता है कि हमारे अंदर बड़ा पेशेंस आ गया है, जेलसी नहीं है, एंगर नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, ये दिखता होगा. बट कभी कभार हम लोग जो थोड़े बहुत 1%, 2% हमारे अंदर वो जो मैला है, उसको जब तक धोएंगे नहीं, वो दूसरे को थोड़ी ना पता चलता. तो मेरे को पता है ना मेरे अंदर क्या चल रही है. मैं लेजी हूं कि नहीं हूं मैं बताऊंगी ना, बाहर वाला थोड़ी ना देख के बता देगा कि मैं लेजी हूं कि नहीं हूं. आई रिमेम्बर मैंने सुश्री को एक स्टोरी बहुत पहले सुनाया था, एंड शी हैड प्रॉब्ली शेयर्ड इट इन YIT कभी एक फोरम में, बट लेट अस गो थ्रू दैट स्टोरी अगेन.
It is about that German tourist जो इंडिया आए थे. A German tourist came to India and he saw that one sculpture, काम चल रहा है किसी मंदिर का, and there were two similar statues being made. तो उन्होंने उस मूर्तिकार को पूछा कि why are you making two statues? उन्होंने बोला कि नहीं, ये पहले स्टैच्यू में ना नाक में थोड़ी सी खरोच आ गई थी तो दूसरा बनाना पड़ा. तो उन्होंने बोला कि कहाँ रखी जाएगी? कहते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा टावर, कुतुब मीनार जैसा टावर मान लो, बहुत लंबा चौड़ा, कहते हैं उसके ऊपर ये स्टैच्यू 6-7 फीट के स्टैच्यू 25-30 फीट के ऊपर रखे जाएंगे. देन द टूरिस्ट आस्क्ड, नाक में खरोच इतने हाइट वाले टावर के ऊपर 6-7 फीट की मूर्ति, उसके नाक में खरोच, किसको पता चलता है? देन द स्कल्पचरिस्ट सेज, मुझे पता है. इट इज लाइक मैंने करा है ना, मुझे पता नहीं गलत है. तो मुझे वो काफी स्ट्रक हुआ कि वी ओनली नो कि क्या हुआ. बाहर वाले को थोड़ी ना पता है कि मेरे अंदर एंगर आया कि नहीं है उस सिचुएशन में. बाहर वाले को थोड़ी ना पता है कि मैं टॉलरेंट थी या अंदर अंदर मेरे को कुछ हो रहा था. ठीक है. सो लेट अस डू दैट. एंड फाइनली, because we will also discuss and people would probably share their experience. So finally, one point which I thought I should be touching upon here, when we were not members of Theosophical Society, let us go back to that day. जब हमें कुछ पता नहीं था, हम अपनी एक लाइफ जी रहे थे अपने हिसाब से, डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन्ड, और अपने मर्जी से, अपने तरीके से, whatever. But when we came into contact with the theosophical literature, the people around, the value system, the belief system, or the science, or the approach, whatever we call it, थोड़े बहुत तो changes हमारे अंदर आए हैं, I'm sure आए हैं. Now, when I was not a member and the very first day I got into this, I'm sure everybody would have thought of something कि अरे ये बहुत बढ़िया चीज है, सुपरस्टिशियस कुछ है ही नहीं, सब कुछ कर्मा के ऊपर है, रीइंकार्नेशन के ऊपर है, ब्रदरहुड के ऊपर है. We got excited, overwhelmed, so many concepts, so many new things, so I'm going to regulate my life इस तरह से. Now that day हमने कुछ अपने लिए सोचा था कि this is how I'm supposed to do things, this is how I'm supposed to be as a theosophist. उस दिन जो एक्साइटमेंट बोले या जो थॉट प्रोसेस बोलते हैं या फिर जो एक आइडियोलॉजी को लेके हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एंड हमें लगा था कि दिस इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू बी, उस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं. व्हाट आई एम और आई वाज सपोज्ड टू बी एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड टुडे व्हाट एम आई. If there is a difference, then probably we have got a couple of things to work on. क्योंकि जब हम सपोज टू बी वाले फैक्टर को लेके आए थे कि मुझे ना थोड़ा देखना पड़ेगा, बोलने से पहले रुक के देखना पड़ेगा, स्पीक द ट्रूथ वाला जो हमारा है कि फिल्टर लगा के बात करेंगे, सोचेंगे काइंड है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, ये सब चीजें हमने जब पहले सीखा, हमने कुछ कुछ करा. बट आई स्टिल इन दैट सपोज टू बी मोड या फिर आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंटली. ये एक एक्सरसाइज एज अ सेल्फ ऑब्जर्वेशन बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल गिव अस a clarity of, as we say it, what I am and what I think I am वाला जो difference होता है ना. I think I am cheerful all the time, but am I? I think I'm very positive in my thoughts, but am I that? So हो सकता है हमें लगता है कि I think I'm so and so, but am I actually that? इस पे हमें थोड़ा क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा. सो सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज वेरियस एस्पेक्ट्स. ये अगर फिजिकली होता तो मैं थोड़े बहुत वर्कशीट्स और डिस्कशन करके कराती, ग्रुप में भी कराती, बट आई जस्ट थॉट लेट अस ट्राई. क्या पता बीच बीच में एक ऐसा वर्कशॉप पॉसिबल हो जाए वर्चुअली भी. सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू ब्रिंग सम जस्टिस टू दिस फोरम एंड टू दिस थीम, दिस स्ट्रक्चर. This is the first time we are doing something, a virtual workshop. I don't know like how far I could do it, but this is what I tried to do. Thank you all. Thank you, Suvralina ji. It was really, very basically any workshop doing, because it's workshop, doing brings clarity. Like I know maybe I can read how to make some recipe,
I can memorize it, I can learn it, but unless I do it, I make it, uh, I will not, realize it fully, what all things are needed and where am I and how much I know. So from an abstract thing, basically this kind of exercise brings things to a very concrete, that yes, this is what I'm lacking. And as you say, over a period of time, the same enthusiasm may not be there with which we started, and then yes, then we take some liberties and all those things. So yes, definitely, I think this kind of workshop really from time to time wake us all up, and we learn from each other a lot in that sense. So that is my feeling about this. And Vimalji, I think she switched on camera. So would you like to say something about that? Yeah, so once you come into theosophy, you also realize that this higher self, or your whatever the higher component is planning a life for you. So it's very interesting. Like whatever your lower mind thinks, it has some other plans. So the kind of people you will meet are the ones who will show you what is lacking in you. Solidly, it will hit you. You don't have to go through this. वो आएगा अपने आप ही आएगा सामने. पता चलेगा when you are so disturbed by somebody, you know where you are. So relationship, mirror of a relationship is the best way to know oneself, and life plans it very well in advance. It knows something is there up there which plans. I don't know whether they are our guardian angels or is it just our higher selves. My theosophic knowledge is not deep in this matter. I would love to study more. If any of you know any books on this part, please share. No, But okay. thanks, it was very nice. I think it's very nice workshop. Very interesting. I think more about it. I made all the columns. I want to think more about it. Yeah, okay. As far as we read, I think in the book Causal Body by C.W. Late Peter, I think. No, or maybe A. Powell, or maybe C.W. Late Peter. I think they have mentioned this, that as you said, our higher self itself, I mean, before coming down again for incarnation, it has the full picture of the coming birth, and it brings all the karma that has to be fructified and people you will meet. Of course, I mean, major things. Some things can be modified as the time goes, but all the big things and learnings, and I think also that also maybe one of the things for the gender, like some experiences and some learnings you can only have in male physical body, and some learnings and experience you can only have in female physical body. So that also one of the factors, and of course which country, nationality, or which family we will born. So yes, there is a design, but since we forget the design at the time of birth, so our plan and that plan, if we are able to bring them in harmony, then very good. Otherwise, yeah, friction. Thanks. But yes, definitely. I mean, I was also making the list, and very nicely, Suvralina ji has conducted this workshop. I don't know if anybody else would like to share anything. Any of our delegates? I know it's sometimes not very, I mean, not naturally, normally we are hesitant to share, but if anybody want to say anything about, or do you think sometimes other than study or listening to a lecture, doing this, and actually this is basically the sadhana, I mean, really doing it. One is, as you said, listening to lectures, giving lectures, but the self-observation, can you share, I mean, if you wish to, any of your experiences in that matter,
or somebody else has done it, and can you, if you would like to, until we wait for some, I think, okay, Lokhande ji wants to say something, but we can come to you, sir. हेलो हाँ, हेलो yes, please. ये सवरलीना जी ने बहुत अच्छा और ऐसे पॉइंट पर आज ये प्रकाश डाला है। एक्चुअल होता क्या है कि समाज के द्वारा, जिसको हम संस्कार कहते हैं, हम हमारी कुछ अपने बारे में मान्यता हो जाती है। जैसे वो कहते हैं कि आप सुंदर हो, तो मैं अपने आप को सुंदर समझने लगता हूँ। कोई बोलते आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट समझने लगता हूँ। तो मैं अपने आप को कुछ लोगों से विशेष समझने लगता हूँ। तो सच में अगर अपना परीक्षण हम करने लगे तो बहुत सारी चीजें हमने मान ली है, लेकिन वो सही है या नहीं है ये हम इसके ऊपर ज्यादा सर्च नहीं करते। तो सवरलीना जी ने जो बात कही है यहाँ पर कि मैं अंदर से जो हूँ लोगों की नजर में नहीं आएगा, लेकिन मुझे मेरा पता है, इसके ऊपर में अपन ने कंसंट्रेशन करना है और अपनी खामियों को समझना है। ये आत्म परीक्षण ही करना है। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा। सवरलीना जी हमेशा एक अलग ढंग से उसको पेश करती है, अलग विषय पर बात करती है। बहुत अच्छी है, क्रिएटिव है। बहुत बहुत धन्यवाद सवरलीना जी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू लोखंडे जी, आपने शेयर किया। और coming back to you for with the same thing, Suvralina ji, अगर आप कुछ कहना। Yeah, I'll just give you one example. Which क्या होता है, मैं अपनी पर्सनल, बहुत ही पर्सनल और एक मैंने बढ़िया मजेदार से एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। इट वाज some 6-7 years back. मैंने अपने आप को बोला कि मुझे डांस सीखना है। न्यू लर्निंग की बात करूं मैं अगर, ठीक है, तो मैंने डांस सीखना ही स्टार्ट किया था कि नहीं। मेरे को एक ऐसा असाइनमेंट मिला कि आई वांटेड टू डू, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ऑन असाइनमेंट यू कैन से इन अ फोरम कि भगवान विष्णु का ना एक नवगुंजर करके है थीम। नवगुंजर मतलब अर्जुन जब जाते हैं शिकार करने जंगल में, उनको कई सारे जानवर रूपी कुछ मिलते हैं और जैसे ही मारने के लिए जाते हैं वो दूसरा फॉर्म ले लेता है। तो ऐसे 9 एनिमल्स का विष्णु ने उनको दिया था दर्शन। फिर फाइनली उसको एक नवगुंजर 8 फॉर्म करके पूजा किया जाता है, ऐसे कुछ था। तो उस डांस का ना कभी कुछ किसी ने परफॉर्म नहीं किया था। तो somebody gave this idea कि can you just choreography, do the choreography and come and do it। तो मेरी जो डांस टीचर थी जिनसे मैं सीखती थी, मैंने उनको बोला कि चलो करते हैं। समवेयर हम करने, तो हमें काम तो मिल गया, हमें लगा हम ये कर लेंगे, डूइंग बीइंग वाली बात मैं कर रही हूँ। और जब करने लगे हमने थोड़ी गोची करी उसमें, गोची इन द सेंस इस तरह का तो किसी ने डांस किया नहीं, हम कैसे भी करके कर लेंगे, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हो जाएगा। हमने थोड़ी चलो, और हमने प्रैक्टिस नहीं करी। हम अपने आप में बॉन्ड बन गए कि क्योंकि इस डांस को किसी ने कोरियोग्राफी नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं लगा हम कर लेंगे तो लोगों को सही लग जाएगा। बट देन वी फॉरगॉट द वेरी आइडिया कि ऑडियंस भले ही नॉलेजेबल नहीं है, बट ऑडियंस को फील तो दिख जाएगा ना। एंड व्हेन इट डजंट कम आउट टू बी अ गुड फीलिंग, देख के समझ में नहीं आए तो आप चाहे कुछ भी करके आओ, आपको आप लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो व्हाट वी डिड इज, हमने सिर्फ 2-4 बार प्रैक्टिस करी, हम करके आ गए। और हमें लोगों ने बड़ा गंदा बोला कि क्या करके आए तुम। फिर क्या हुआ ना, मुझे 1-2 दिन के लिए ना बड़ा अंदर ऐसे लग रहा था कि यार हमने इतना मेहनत भी तो करा, ऐसे लोगों ने कैसे मुंह पे बोल दिया। भले ही मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मुझे फर्क पड़ा जब लोगों ने ऐसा बोल दिया कि फर्क पड़ा। और मैं अपने आप को दे रही थी, बाहर तो मैं बोल नहीं पा रही थी, अपने आप को क्या लॉजिक दे रही थी कि यार मैंने इतने लेट एज में स्टार्ट किया, एक तो मैंने करा, लोग क्यों समझेंगे, व्हाई वुड द अदर पर्सन रियलाइज कि आपने 40-45 साल बाद एक डांस फॉर्म को नया स्टार्ट किया। दैट इज व्हाई यू विल बी एक्सक्यूज्ड। दैट वाज माय फर्स्ट गलती कि ये जो मन में ले आना, जैसे अभी लोखंडे सर कह रहे थे ना कि हमने इमेज बना लिया। मैंने ये इमेज जो बना लिया कि मैंने क्योंकि लेट एज में स्टार्ट किया तो मैं कुछ भी करूं क्या। तो दैट वाज बोलते ना एकदम तमाचा पड़ा मुझे
कि यू कैनॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. आई कैनॉट गो एंड से कि बिकॉज मैं बड़े लेट एज में आके मुझे मेडिटेशन और योगा ये सब पता चला तो मैं कुछ भी करूं चलेगा. इधर आई डोंट डू और आई डू इट इन द करेक्ट वे. कहने का मतलब, तो ये मेरी एक बढ़िया लर्निंग उस टाइम हुई थी कि नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेनेवर आई पिकम समथिंग आई शुड फर्स्ट ऑफ ऑल जज कि भैया इसको अगर ढंग से कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो किसी का मजाक, क्योंकि एक वो भी एक आर्ट फॉर्म का मजाक हो जाता है, ऑडियंस का मजाक हो जाता है. सिमिलरली अगर मैं एक टॉक देने जाऊंगी, सिर्फ उस डांस फॉर्म से इस तरह का होने के बाद ना मेरे टॉक्स के लिए भी अफेक्ट हुआ कि मैं कुछ भी जाके बोल नहीं सकती. आप समझ रहे हैं? सो मैं हर एक टॉक को ना लिखती हूँ. एक बार कोई एक मीटिंग में मेरे साथ और सीनियर मेंबर्स भी थे, तो किसी का एकदम टॉक ठीक से हुआ नहीं, तो उन्होंने बोला, मैंने कहा आपने लिखा नहीं था? कहते नहीं मुझे लगा कि सब, तो मैंने कहा नहीं, चाहे कितना भी पता हो लिख के लेके आइए. यू नेवर नो वहां जाके क्या हो, आपके पास एक रेफरेंस, क्योंकि हमें लगता है हम तो एक्सटर्म को कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे. तो माई पॉइंट हियर इज we learn this with a period of time, with people's feedback, with our own experience, कि we cannot take things for granted, चाहे वो छोटा सा काम क्यों ना हो. तो मुझे लगता है कि एज अ थियोसॉफिस्ट, जैसे मैं क्या बोलूं, क्या लोगों को शेयर करूं, किस तरह से करूं, वो मेरा कॉन्शियस एफर्ट उसमें जाना बहुत जरूरी है. बिकॉज आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ दिस लर्निंग. मैं भले ऑथोरिटी नहीं हूं, बट मैं एक एम्बेसडर तो हूं. तो ये सब चीजें हैं. सो दीज आर ऑल सेल्फ ऑब्जर्वेशन. किसी बाहर वाले को पता नहीं चला कि मेरे अंदर क्या हो रहा था, मुझे दुख हुआ या मैं अपने आप में वो झेल रही थी, मैंने वो लर्निंग को सामने लेके क्या किया. नोबडी गॉट अ क्लू ऑफ इट, बट डीप विद इन सुव्रलीना गॉट इट कि नहीं यार ये सही नहीं था. तो ऐसे हमारे पास बतेरे एक्सपीरियंस होते होंगे. आई एम श्योर बतेरे एक्सपीरियंस होते होंगे. हमें लगता है कि दूसरों को पता नहीं चल रहा है, बट हमें पता चल रहा है क्या हो रहा था हमारे मन में, हम क्या एक्सक्यूज दे रहे थे अपने आप को. ठीक है ना? तो ये Yes. सब ऐसी तो बहुत चीजें निकल के आएंगी अगर मैं बताऊं. No, but thank you for sharing this one example out of so many. And yes, I think in self-observation is the key to any spiritual practice, or not for that matter, we can actually, even if you want something in the material world or success and self-observation, that's why all these like smart goals, or you do an annual meeting, that what went wrong or what was Right, good, right. then all those things. So these, as an organization you do self-observation, as an individual you do self-observation, and that is always a great help. And डॉक्टर कमल मोहनोज जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, नमस्कार शिखर भैया और सुवलीना जी. बहुत अच्छा, मुझे अब बहुत अच्छा लगता है. मतलब कि सुनकर भी अच्छा लगता है, फील करके भी अच्छा लगता है, और उससे मुझे कुछ मतलब इंस्पिरेशन भी मिलती है. क्योंकि आजकल थोड़ी सी मैं बीमार हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, परंतु फिर भी मुझे सब बहुत अच्छा लगता है. और मेरे को बहुत सारे एक्सपीरियंस है जीवन में, कभी कभी छोटे छोटे से सुनाने की भी इच्छा हो जाती है कि भाई किस तरीके से. मुझे एकदम याद आया, उसने कहा कि पहले क्या थे और बाद में क्या थे, तो एकदम ध्यान आया कि हम छोटी सी बच्ची थी, तब मेरी दादी ने मुझको केवल ये कहा था कि ये देख लेना कि भाई बाहर कोई जाता है, किसी को तकलीफ है तो उसकी तकलीफ तो मिटा सकती है, किसी की चीज गिर गई है तो उठा देना, किसी का कुछ हो गया तो कर देना. छोटी सी बच्ची थी तब, तो मैं समझ गई कि दूसरों की हेल्प करना मतलब एक बहुत अच्छी चीज है. इतनी बात मेरी समझ में आई थी, और वो लिटरली मैं जीवन भर वो करती रही, और मुझे अच्छा लगता रहा, वो रिफाइंड होती रही. ये सब बहुत अच्छा लगा. फिर मेरी माँ ने मुझको सिखाया था कि सबसे प्रेम करना चाहिए, और केवल घर वालों से भी नहीं करना चाहिए, और स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए. तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी. और मेरे पिताजी ने जो मुझको है, छोटी सी थी तभी पढ़ना सिखा दिया. छोटी छोटी कहानियों की किताबें ला के दे देते थे, कहानी सुना देते थे, दादी भी कहानियां सुनाती थी. तो उस चीज से मैंने लर्न किया कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये सारी बातें मतलब वो हुई थी, तो अच्छा लगता था. और अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल. हाँ. तो इसी तरीके से बहुत लेटर एज में मैंने थियोसॉफी को ज्वाइन किया, और करने के बाद में भी मैं इतनी बिजी थी सर्विस में कि मैं बहुत
मेरे को किताबें पढ़ने को भी देते थे लोग, तब मतलब मैं उनको परशुराम जी से भी कह देती थी भाई इतनी किताब पढ़ने के बाद मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि हालांकि मैं रोजाना पढ़ती थी, खूब पढ़ने का शौक था, परंतु बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि पढ़ाना भी पड़ता था और भी टीचिंग का काम भी करना पड़ता, एडमिनिस्ट्रेशन का भी करना पड़ता था, देयर वाज मेनी थिंग्स। परंतु जैसे ही मैं रिटायर हुई, मैंने तय कर लिया कि अब मैं मतलब जो है कुछ भी मतलब चाहे मुझे कोई कितना भी कहे कि आप और ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, ये ज्वाइन कर लो, सर्विसेज में मैं सर्विस ज्वाइन नहीं करूंगी। तो बहुत लोग मेरे से बहुत नाराज भी हुए कि क्या है ऐसे आप कैसे कर रही हो, और आप इतने कोई नए प्रोजेक्ट नहीं भेज रही हो, ये नहीं कर रही हो। मैंने कहा नाउ नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेंडिंग द प्रोजेक्ट्स एंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वट एवर आई हैव लर्न आई वांट टू फॉरगेट दैट एंड आई वांट टू लर्न इन द अदर मैनर। तो उसके बाद में मैंने थियोसॉफी को सीरियसली लेना शुरू किया। तो भी शुरू शुरू में मैं बाहर नहीं जा सकती थी, मेरे पेरेंट्स बीमार थे, तो मतलब मेरे पेरेंट्स में भी मेरे फादर और मदर दोनों इतने मतलब स्पिरिचुअल थे कि मुझे पता था कि मैं उनको छोड़ के भी नहीं, मेरी बहुत सेवा करने की भी इच्छा थी कि बाहर जाके ये कर लूंगी वो कर लूंगी। तो मेरे को लगा कि नहीं ये गलत होगा, मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। एक बात थी, दूसरी बात थियोसॉफी में फिर मेरे को परशुराम जी ने इतना फोर्स करके, और मतलब जो ये कैंप होता है अपना हिल स्टेशन पे, अब देखिए मैं नाम भूल रही हूँ, तो मैं गई 4 बार गई हूँ मैं वहां पे। तो वहां पर मतलब उन्होंने मेरे को भेजा, और अमरनाथ आचार्य जी उस समय डायरेक्ट कर रहे थे वो, और मैं पूरे टाइम नहीं जा सकी, उसमें भी मैं केवल 10 दिन का पैसा दे के केवल 3 दिन अटेंड किया। आप सोचिए आने जाने में भी 2-2 दिन लगते थे, तो ज्यादा घर से बाहर नहीं रह सकती थी। तो वो 3 दिन का कैंप ने मुझे इतना इंस्पायर किया, मैं आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि मैं नहीं हूँ, ये हाथ पैर मेरे नहीं है, मुझे लगा कि बॉडी मैं नहीं हूँ। पहली बार मुझे लगा कि अध्यात्म में आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए, एंड देन मतलब मैंने सीखना शुरू किया। और ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ बहुत, पर मैं थोड़ी सी बात कहना चाहती थी। उसके बाद में मैं सब शेयर भी करती थी, अपने साथ जितने लोग होते थे थियोसॉफी में बहुत लेडीज नहीं आती थी, मैं उनको इंस्पायर भी करती थी, और ये सब करना सीख लिया था। और थोड़ा थोड़ा खुद भी अभी भी लर्न करती हूँ, इट्स होल लाइफ टू लर्न। तो थैंक यू वेरी मच शिखर भैया, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू कमल जी, आपने इतना शेयर किया बचपन के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और जीवन के बारे में। थैंक यू सो मच, इट्स वेरी एनरिचिंग, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और अगर कोई राजम जी आप कुछ कहना चाहती हैं? नहीं तो फिर हम। जी भाई। हाँ जी सर, जी जी मैम। असल में एक सूफी संत के बारे में कहा जाता है, संत यानी विचारों से। उनके साथ एक बालक था, रात को किसी खेमे में रुक गए, सवेरे बच्चे को बाप ने उठाया, नमाज का वक्त हो गया उठ जा, और बच्चा उठा और उसने देखा बाकी सब लोग सोए हुए हैं। उससे कहा अब्बू ये लोग देखो सोए हुए हैं। उसने कहा बेटा तू भी सो जाता तो ज्यादा अच्छा, उठकर अगर दूसरों की बुराई ही करनी है तो उससे तो अच्छा तबीयत तू भी सोया रहता। जागरण का मतलब दूसरे छोटे हैं और अहम अहम बढ़े। सॉरी भाई, मैं बहुत सारी दुकानों से शॉपिंग करके थियोसॉफी की तरफ आई हूँ, इसलिए अब मुझे जब से मैंने पुनर्जन्म, मैं असल में एनिबेसेंट से यहाँ आई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा अहंकार मुझ में बढ़ रहा है भाई। तो मुझे बता दिया है हमारे यहाँ के लोगों ने कि 1 मिलियन साल तक मैं विनम्र रहूंगी, 1 मिलियन साल तक अगर मैं सदाचारी रहूंगी तो अगला जन्म मेरा बेहतर होगा। तो मैंने आसपास के लोगों को देखना ही बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर हम लोग जनता जनार्दन के बीच में जाना ज्यादा शुरू करें वो ज्यादा अच्छी फिलोसफी होगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एलीट ग्रुप में मैं घूम रही हूँ, ऐसा मुझे एहसास हो रहा। और मैं बम्बई की हूँ तो झोपड़पट्टी ही झोपड़पट्टी। तो सॉरी, बहुत कुछ सीखा, लोग बहुत अच्छे हैं, और मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ लोग नाराज ही नहीं होते यार, मैं झगड़ा किससे करूं। सॉरी, ये मेरा अनुभव है, थोड़ा दुखद अनुभव है कि यार तू थोड़ा नाराज हो तो मैं तेरा गरेबा पकड़ूं, तू कर क्या रहा है। सॉरी, ये मेरी विचार था। 7 साल से मैं हूँ यहाँ पे। ठीक भाई, थैंक यू डॉक्टर राजम जी, और शेयर करने के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि
सर थियोसॉफी तो कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए, और अगर नहीं पहुंच रही है तो उसमें हमारी ही कुछ कमी है, क्योंकि कर्नाटक में हम लोग देखते हैं कि कैसे गांव गांव में भले ही उन्हें इंग्लिश आती हो ना आती हो, लेकिन थियोसॉफी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो उसको लेके जाते हैं। तो कहते हैं ना कि समझाने वाला कोई हो तो वो उस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बट थैंक यू फॉर दिस experience and feedback, and if nobody else is there, so we can close the session today. Yes. And so on behalf of Indian section and the Young Indian Theosophist, I extend my heartfelt gratitude to Sister Suvralina Mohantiji for coming and taking time and sharing with us her experience and her experience in life, and also experiencing in how to learn and do and share it. And this workshop was really interesting. I thank all the delegates who attended today's session. And now for closing, let us come all together and pray for the welfare of this whole existence. Om सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you once again, everyone. Have a great Sunday and the week ahead. See you next Sunday, same time, 9 a.m. Indian Standard Time. शिखर जी, हेलो शिखर जी। हाँ हाँ शर्मा जी, यस यस। मैं कह रहा था कि ये जो सेशन हुआ बहुत अच्छा हुआ। इससे थियोसॉफी ज्वाइन करने के बाद काफी चेंजेस आता है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि इस सेशन को ऐसा ही एक बार और होना चाहिए। और उसमें जो इन्होंने सुनिए, इसमें जो टिप्स दिए इन्होंने, उस टिप्स के किस किस ने क्या क्या वर्क किया, हाँ। वो शेयर करें। ऐसा कुछ होना चाहिए। जिसने बहुत सारी टिप दी है, उसमें से हमने क्या क्या करना शुरू किया या हमें क्या क्या अच्छा लगा। तो वो मतलब सुवरलीना जी कुछ और भी कहेंगे या आप कहेंगे, उसके बाद आधा घंटा लोगों से पूछा जाए कि कोई मतलब क्या शेयर करना चाहता है। तो उससे हमें ये बड़ा अच्छा हिंट मिलेगा। हम अपने बारे में सोचने लगेंगे कि हमें क्या कमी थी और क्या हमने शुरू किया, क्या छोड़ दिया था, क्या करना चाहिए था। ये मेरा सजेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, वी विल ट्राई। इनफैक्ट शिखर, अभी इसको ना कभी मौका मिले तो हम लोग या तो इंडियन किसी दिन एक दो घंटे का हम लोग फिजिकल वर्कशॉप करते हैं। हाँ फिजिकल, एक्चुअली हाँ, ऑनलाइन में सम पीपल आर नहीं, जब लोग आएंगे ना पहले से प्लान करेंगे, जैसे हमारे वहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन ये वो सब